Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, we will continue cell organelle, and in this we have started the cell membrane. Now, previously you have seen the various molecules transportation within the cell through diffusion, facilitated diffusion, and active transport. Now, in this slide you see a mechanism of ion transportation. So again, this is by three mechanisms you have previously seen in the previous slide. That is, the ions are transported by the ion transporting cell through same three mechanisms: simple diffusion, facilitated diffusion, and primary active transport. Now in this you see, now these are the hydrophilic ends of the phospholipid, both outside and inside. This is the hydrophobic region of a cell membrane. We will discuss in coming slides. Now, the ion simple diffusion from higher concentration to lower concentration move inside the cell membrane. This is the facilitated diffusion. The molecules or ions are transported through special channels. These are the transmembrane proteins moving across the whole thickness of the membrane by a specialized channel. Now this active transport, this is again a gate system. When ATP molecule break down to provide energy from lower concentration to higher concentration, the molecule moves from out to in or from in to outside. So this is the mechanism through which ions are also transported through this mechanism. What is the composition of the 50% volume percent composition of a cell membrane? The phospholipid, phosphatidylcholine, which is also called as lecithin, phosphatidylethylamine, also called cephalin, and cholesterol. These are the three main components of a phospholipid present in the cell membrane. The protein, or that is the more than 50% of volume per volume, and this is the proteins of the integral and peripheral. The trilaminar appearance under electron microscope called a unit membrane. The proteins are of two types: integral and peripheral. Peripheral means either from external side or from internal side. The integral proteins are embedded within the cell membrane, either through and through or within the cell membrane. So trilaminar appearance is due to the double layer of the phospholipid protein sandwiched, so it is called as a unit membrane. Now in this diagram you see a trilaminar pattern of a cell membrane. Inside a lamina, outside lamina, and in between is the translucent, transparent area. These are the two translucent, in between is the transparent area. So this membrane is called as a unit membrane. It is the electron microscopy, cell nucleus, cytoplasm, hemic organelle, and this is the cell membrane, inside layer, outside layer, and a triple pattern of a cell membrane. It is called as a unit membrane. This is interstitial space, and this is the again a cell which is interposed. Now thickness is, you see in this slide. So thickness is about 8 to 10 nanometer. So in this diagram you see, so this is the area which is the highly hydrophilic, inside, outside, and this is the fully hydrated area where the water molecules are present. Then the fully dehydrated area is in between, which is the hydrophobic, because there is no water molecule. It is stable, no ion charges over here. And then the lipid head, this one, and lipid tail, these are the whitish. So this is the thickness you see in this slide. That is the between this inside unit membrane and 2.5, 3.5 nanometer. Now this is the hypothetical diagram of a phospholipid molecule, macromolecule with phosphate head and two fatty acid tails. Now this is the phosphate head,
PO4 negative charge, and these are the two fatty acids. These are called tail. These tails are highly hydrophobic. These are having stable charge, so they repel the water molecule, whereas this head are the hydrophilic because they are negatively charged, they attract water. So tails are always fatty acid, but the phosphate are the heads of the phospholipid. This is the chemistry of a phospholipid in a cell membrane. What is the arrangement? Now in this diagram you see the arrangement of a molecule, macromolecules, that is seen in this diagram. Look at that these are the hydrophilic heads of a phospholipid. These are fatty acid chain. So the tails are facing each other within the cell membrane. In the cell membrane, opposing fatty acid tails, they come closer, as in this diagram, where the heads are either exterior or either interior toward the cytoplasm. So this is the typical arrangement of a phospholipid. Heads are outside or inside, whereas tails are opposing each other within the cell membrane. The carbohydrate molecule, they are attached usually on the protein, forming a glycoprotein. So they act as a receptor. Look at the picture. These are multiple molecules of a carbohydrate. No, this is the cholesterol. Now look at the cholesterol. It is sandwiched between the tail of the fatty acid of the phospholipid. So the proteins are either present through and through. This is the transmembrane protein, glycoprotein. These are inside microfilament of the cytoplasm. Now look at the polarity. Outside, inside, the heads are polar, whereas inside is the hydrophobic region. This is the arrangement of the protein, maybe toward the exterior, maybe inside, maybe toward the inside in the cytoplasm. So location of the proteins are different. Some proteins are exoprotein, some proteins are enteroprotein, and some are like this, transmembrane through and through. Now integral protein directly incorporated in the lipid bilayer. So they are protruding either inside or outside through the surface. These span whole thickness are called transmembrane protein. So integral proteins are those which are directly incorporated within the lipid bilayer. This is the definition. Distributed as a globular parts. They are either inside or outside the surface. They are called exoprotein or enteroprotein. And those span or thickness are called the transmembrane. These are the three variety of the integral protein. सबसे पहले वैरायटी ये है कि ये इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये विद इन द बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसी होंगी कि या तो फिर बाहर की तरफ होंगी या एम्बेडेड होंगी या टुवर्ड द साइटोप्लाज्म होंगी. और थर्ड वैरायटी क्या है कि सारी की सारी प्रोटीन जो है वो एज ए गेट एक्ट करेगी, थ्रू एंड थ्रू स्पैन कर जाएगी फ्रॉम द होल थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. इट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. Integral proteins are not bound, however, move across the membrane in fluid mosaicism. ये भी आपके सामने बात होगी कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, तो ट्रांसमेम्ब्रेन जो हैं वो मूव करती रहती हैं ए बिट लिटल, बट द एक्सो एंड एंटीरियर प्रोटीन एंड embedded protein they move freely within the fluid mosaicism. That's why the hypothesis of fluid mosaic model is fully fit in this situation where the proteins, जहाँ प्रोटीन जो हैं वो लिपिड के सी में जहाज की तरह वो मूव करती रहती हैं. इंटीग्रल प्रोटीन लोकलाइजेशन ऑफ दिस प्रोटीन एट वन पॉइंट ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कैपिंग. अब कैपिंग क्या है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रोटीनस है, हार्मोन्स हैं या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो टच करता है सेल मेम्ब्रेन को इन्वेड करने के लिए, तो वहाँ पे उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर जो हैं उस इनकमिंग एंटीजन के या इनकमिंग सिग्नल के वो लोकलाइज हो जाते हैं प्रोटीन की शक्ल में एक ख़ास जगह पे जहाँ पे वो
एज सिग्नल आया है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ए केपिंग फिनोमिना. Localization of the specific protein to give a response to a incoming signal at one point is called capping. कि एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल रिसेप्टर लगे होते हैं. एक तरह के रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन के एक ख़ास हार्मोन को रिस्पॉन्स करते हैं, जब वो ख़ास हार्मोन आएगा, नॉक करेगा मेम्ब्रेन को, तो फ़ौरन जो प्रोटीन जो स्पेसिफिक होंगी उसको रिसीव करने के लिए वो फ़ौरन पहुंचेंगी और गैदर कर जाएंगी. गैदरिंग करने को हम कहते हैं कैपिंग फिनोमिना. फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम यूँ समझें कि ऑर्डिनरी दुनिया में अगर आप देखें, कोई इनकमिंग कोई एम्बेसडर आता है, कोई हाई फाई पर्सनैलिटी आती है, तो उसको इस्तकबाल करने के लिए स्पेसिफिक निज़ाम होता है, स्पेसिफिक वेज हैं जिनसे हम उसको रिसीव करेंगे. सिस्टम होता है, एक चैनल होता है, उस चैनल को हम ऑब्ज़र्व करते हुए उस आदमी को रिसीव करते हैं. सारे के सारे जो हैं उस आदमी के पास आते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन फॉर प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक प्लेस पर ले जाते हैं. सेम इज़ द केस व्हेन द इनकमिंग एम्बेसडर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टचेस द सेल मेम्ब्रेन और नॉक द सेल मेम्ब्रेन. उसके साथ क्या होगा, उसके जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं रिसेप्टर्स, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसको रिसीव करेंगे. इस फिनोमिना को कहेंगे कैपिंग फिनोमिना. Now, what are the peripheral protein? These are loosely attached, easily be removed. These are called endoprotein or exoprotein. जैसे मैंने पहले बताया कि ये दो वैरायटी हैं, लूजली अटैच्ड हैं, ये मूव करती रहती हैं. या तो फिर वो एंडोप्रोटीन होगी टुवर्ड साइटोप्लाज्म, या फिर वो एक्सोप्रोटीन होगी टुवर्ड द एक्सटीरियम. हैव अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट माइटी कॉल्ड द ग्लाइकोप्रोटीन. उनमें कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जिनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा, तो उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. ये रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगे. दे आर अटैच टू द इंटीग्रल प्रोटीन और डायरेक्टली टू द लिपिड बाइलेयर. ये जो प्रोटीन जो होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन, या तो फिर डायरेक्ट अटैच होती हैं इंटीग्रल प्रोटीन के साथ या फिर लिपिड बाइलेयर के साथ. ये आपने ध्यान में रखना है. एंडोप्रोटीन टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, एक्सोप्रोटीन टुवर्ड द एक्सटीरियर. Usually carbohydrate molecules are attached to form the glycoprotein, whereas these integral proteins are directly incorporated in the lipid bilayer directly, या फिर प्रोटीन के साथ जुड़ी होती हैं. Now look at the picture of a bit elaborated structure of a cell membrane. These are the phospholipids heads. These are the fatty acid tails. Tails are facing each other, head are toward the exterior or interior. Now this is the endoprotein. Look at the coils of a protein which is facing toward the cytoplasm. So this is the single pass protein that once started from the inside moved through and through toward the exterior. Single turn helical form protein, which is also called as transmembrane protein. It is called as a single protein, single pass protein. Now, these are the multi-pass protein. Look at it, starting from this, move toward the exterior, then coil back toward the interior, then again the exterior. So there is 3 turns of a protein. This is called as multi-pass transmembrane. Transmembrane means through and through the whole thickness. This is the multi-pass subunit, and this is the peripheral membrane protein, the green. Look at this is toward the endoprotein. This one is the exoprotein. This is the exoprotein. This one is again a endoprotein. So this is the structure through which you localize the various locations of the protein. Some proteins are single pass, multi-pass, bypass protein. Some are toward the inner side, endoprotein. Some are toward the exterior, exoprotein. So this is the variety from which you can see the location of the various type of protein. Now, integral protein, intrinsic protein, extrinsic protein, what is the difference? Now, these are the chemical differences
for your concern, you will have to sometime memorize it. Amphipathic, two hydrophilic. These are the bound to extracellular surface or membrane. These are the deep protein anterior through and through. Amphipathic means two hydrophilic ends separated by an intervening hydrophobic region that traverse the hydrophobic core of the lipid bilayer. Two hydrophilic ends separated by an intervening hydrophobic region. So these integral protein में एक end जो होगा toward the lipid bilayer वो होगा hydrophobic. Inside the channel जो होगा वो hydrophilic होगा ताकि transportation जो है वो आसानी से हो सके. Bound to the hydrophilic region of the specific integral protein head group of the phospholipid. जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी उसमें क्या होगा कि या तो वो बाउंड होगी हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ द स्पेसिफिक इंटीग्रल प्रोटीन और हेड ग्रुप ऑफ द फॉस्फोलिपिड. चूँकि ये प्रोटीन इजीली भी रिमूव हो सकती है इसलिए ये अपने आयनिक बॉन्ड बनाएगी विद द हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड और इंटीग्रल प्रोटीन. हाइड्रोफोबिक वांडर वाल फोर्सेस जो है ये इसको इन टच रखेंगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एच बॉन्डिंग जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की होगी. स्पैन द होल थिकनेस लेयर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यूजुअली possesses enzymatic activity. आयन चैनल कैरियर ट्रांसपोर्टेड रिसेप्टर एंजाइम. तो ये इनका डिफरेंस है कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होंगी तो वो या तो रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगी या एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करेंगी, लेकिन जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगी वो आयन चैनल के लिए कैरियर ट्रांसपोर्ट के लिए वो स्पैन करेगी थ्रू थिकनेस. फंक्शंस ऑफ ए membrane protein function. Structural proteins are attached to the macrofilament in the cytoskeleton which ensures stability of the cell. नो ये बात याद रखें कि ये खाली मेम्ब्रेन जो है वो हवा में नहीं होती. जब प्रोटीन जो है फिल्ड मोज़ेक मॉडल में या तो अंदर की तरफ अटैच होती हैं या फिर लिपिड बाइलेयर के साथ अपना फोर्सेस बनाती हैं, वांडर वाल फोर्सेस. तो इट गिव एडेड स्ट्रेंथ टू द सेल. दैट इज द एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द सेल. सेल एडिशन मॉलिक्यूल अलाउ सेल टू आइडेंटिफाई ईच अदर एंड इंटरैक्ट. तो ये भी वही बात हो गई कि जो आपकी दीवार है घर की या सेल मेम्ब्रेन की, उसको एडहीजन दूसरी के साथ सेल वाल को या सेल मेम्ब्रेन को जोड़ने के लिए ये प्रोटीन जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो एक्ट करती है, उसको आपस में जोड़ती हैं. मेम्ब्रेन एंजाइम प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ सब्सटेंस एसेंशियल फॉर द सेल फंक्शन. जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनमें कुछ एंजाइम एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वैरायटी ऑफ सब्सटेंस होते हैं एसेंशियल फॉर सेल फंक्शन. मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स serve as a connection between the cell internal and external environment. Transport protein play an important role in the maintenance of the concentration of iron. तो जब एक चैनल बना हुआ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, इस तरीके से इनसाइड मेलियो और आउटसाइड उनकी जो होम्योस्टेसिस है वो सारी की सारी इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से होगी बिकॉज दे आर कंसर्न फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड आयन. Now this is the picture of how these protein make function in a cell. ये अल्लाह ताला ने प्रोटीन जो बनाए हुए हैं उनके फंक्शन क्या क्या हैं ये हमने आपको 4 फंक्शन यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं. These are the adhesion protein. Look at the picture. This is the one cell membrane. This is the next cell membrane. So these proteins are called adhesive protein. ये ऐसी प्रोटीन जो कि सेल के आपस में जोड़ती हैं, इसे हम कहते हैं सेल जंक्शन. तो सेल जंक्शन के लिए जो हेल्प होती है वो एडहेजन प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं. दीज आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. लुक एट द पिक्चर. दीज आर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. दीज आर फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दीज आर द कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन थ्रू एंड थ्रू हैविंग अ चैनल. यहाँ मैं समझाना चाहूँगा कि ये जो एंड होगा या ये जो सरफेस होगी ये हाइड्रोफोबिक होगी, इसका वांडर वाल फोर्स के साथ एक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी टेल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक खुद हैं. यहाँ पे वांडर वाल फोर्सेस एक्ट होंगी ताकि प्रोटीन एंकर रहे. ये जो चैनल बनेगा थ्रू एंड थ्रू ट्यूबुलर चैनल ये हाइड्रोफिलिक होगा जहाँ पे आयन ट्रांसपोर्टेशन होती रहेगी. दिस इज सेम. दीज आर रिसेप्टर. लुक एट द पिक्चर. देयर इज नो ट्यूबुलर सिस्टम. दीज आर सॉलिड प्रोटीन हैविंग कार्बोहाइड्रेट molecules on the surface apical zone. These are called receptor protein. ये रिसेप्ट करती हैं
कोई भी ऐसा इनकमिंग सिग्नल है, कोई हार्मोन है, कोई न्यूरो ट्रांसमीटर है, कोई केमिकल्स हैं, कोई एनी अदर मटेरियल जो कि आएगा, तो वो सबसे पहले इसको रिसेप्टर प्रोटीन को आके नॉक करेगा। ये अपनी शेप बदलेंगी और उसको गिव वे करेंगी टू पास थ्रू दिस रिसेप्टर, पास ऑन टू द सिग्नल टू द सेकंड रिसेप्टर्स विद इन द सेल. These are recombination protein. It can recognize whether helpful, injurious, hormone, or any particle which is helpful for the cell or induced the cell. ये recognize करेंगी कि कौन हमारे घर के दरवाजे पे आए हैं, हमारा अजीज है, रिश्तेदार है, हार्मफुल तो नहीं है. ये रिकग्नाइज करने वाले प्रोटीन जो हैं ये एक्ट करेंगी. सो प्रोटीन के क्या फंक्शन हुए? रिकग्निशन, रिसेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एडहेजन. ये आपने उन प्रोटीन को, जो प्रोटीन हैं ट्रांसमेम्ब्रेन या एंडोप्रोटीन, एक्सोप्रोटीन, उनके फंक्शन आपने ज़हन में रखने. व्हाट इज़ रिसेप्टर? उसका मैं आपके ज़हन में थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं कि रिसेप्टर क्या चीज़ है. यहाँ पे आप देखें कि एक रिसेप्टर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म है. ये हार्मोन आया, दिस वन, ये रिसेप्टर फॉर स्पेसिफिक फॉर दिस हार्मोन, ये वेज बना हुआ है. उस वेज में you see a extracellular hormone, and this hormone fit into the receptor wedge, and this wedge will then convey the signal through the transmembrane protein, reaching in the intercellular space, that is the cytoplasm, from where the configuration will change. यहाँ पे आप देखना चाह रहे होंगे configuration क्या change होगी. Look at this is the cubical form of a protein. Now over here, this is a rounded formation. So this is the change, morphological change within the transmembrane protein. So this morphological change will give the signal to the second messenger from where hormone binds. This is the configuration change. यहाँ पे receptor जो है वो change कर देगा. ये signal जो changing pattern का है, it will move toward the cytoplasm to the second messenger, from where it will move to the produce a specific response. Hormone binding, then changing of the shape of the receptor to give the signal to the second messenger to activate receptor, stimulate response in the cell. So this is the mechanism how the receptor and protein interaction will take place. Now this is again a mechanism through which how can we produce a response. Now look at the picture. This is a globular protein, transmembrane receptor protein, chemical messenger. This is the incoming signal coming from the extracellular space to our cell. So what will happen? It will attach and trigger to this protein. Now this is the G protein complex. This is second messenger. Now this is the second messenger. Always remember, when receptor touches, the second messenger will activate. This, when it activates, it will change the configuration. It will change the configuration of the protein, and protein will, what happen? The protein will then change the shape and produce a channel. So this channel will allow the molecule to move within this channel to pass into the cell interior. This is the gated theory. This is called a gated theory. So this gated channel will only be second messenger pathway, that is G protein. This G protein converted into second messenger receptor, and then enzyme will release, and this enzyme will open up the channel and the molecule will move inside. Now this is the glycoprotein. It is also recognition. It is the gated theory. Messenger degradation, then G protein activation will act as second messenger. This will produce enzyme. This enzyme will act on this protein, which is the gated protein. So gate will open up and the messenger will come into the cell to produce a response. Now, thank you very much today this lecture. Next we move on to the mitochondrion.